Hey, what's up? कैसे चल रही है आपकी Saturday evening? Yeah, electrochemistry. We're going to wrap this up today. You should be able to see me here right about now. कैसे हैं? How are you doing? By the way, I got some very interesting answers for the homework questions from the electrochemistry last wala session. That was part 7, I want to say. खैर, description में links हैं पूरे playlist के electrochemistry के. Also the electrochemistry PQ PYQ1. What's up, Rek? Abhishek, कैसे? How are you doing? क्या चल रहा है? Thanks for giving me answers to those questions. पहली बात तो ये, yeah, that was really nice of you guys to solve those questions. It was a JEE advanced का level 2006 का. That was the year that I gave my JEE. Yeah, which was a while back, huh? 2006. That sounds like another lifetime. Yeah, lifetime ago. Just figuring out all the windows, and here we are, and I've got your chat open now. Okay, what's up? अरे लिखने वाली विंडो आ गई भाई. लिखने वाली विंडो खुल जा सिम. There you go. That's my writing वाली window. Although you can't see it. Oh, this mic's falling off, huh? Hold on. All right. Yay! What's up? Good evening. So, where are we at? Right? कहाँ हैं हम लोग? Okay. Here, I've got this. Whoops. There you go. Right? That's where we are at. It's, what's the date today? December 2nd? Right? And voila! We started off with the stoichiometric ideas. We did this on Thursday, right? आज हम लोग हैं यहाँ पे. We are doing electrochemistry part 2. After that, we'll continue with the regular plan जो है हम लोग का revision का crash course का whatever you want to call it, physical and inorganic chemistry. These are all the sessions I'm going to cover with you all the way through December till Jan 6. Yeah, that's the general plan. And इसके अलावा, what's up? Hi Abhinandan, Republic of India. That's a cool name. Besides that, if you're unable to find my other sessions for whatever reason, here you go. I have made playlists on this channel. But फिर भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा मुश्किल है, then you can check it out from this link here. Self-explanatory, yeah. This is the link to a spreadsheet. Okay, homework question. Let's get to that. Homework question. कहाँ गया भाई homework question? इसको क्या कर दिया जाए hide and let's get started. It was a JEE का सवाल. Here it is. Try it out if you haven't already. Please. I'll be back in 30 seconds. Try this question out. By the way, Rek and Yuvraj gave me answers. You should try this out right now. It's a very interesting question. मुश्किल है, आसान है? Let me know. Try it out. Yeah. You have what? Let's start this, yeah? Okay. That's weird for you to be speaking of around here. If you're serious, please take care. If you're not, really not a cool thing to be joking about. Yeah. If you're trying to be funny, it's not funny. Yuvraj, 55. Yuvraj and Rek, look at that. जरूर जल्दी से आंसर देते हुए. 1 second. In a session. कुछ लोग कॉल कर रहे हैं. You're in session now. All right. Yeah, easy. Yuvraj. Republic of India also say 55. लग रहा है सब लोगों ने किया हुआ है JEE के पुराने सवाल. खैर, let's go through this. Yeah, this was the homework from the last session of electrochemistry. KSP कुछ वैल्यू दी हुई है, right, of some AgBr thing. उसमें आप ऐड कर रहे हो AgNO3, which means you're basically adding some amount of Ag plus. Specifically कितना? 10⁻⁷ molar of this. And we've been asked to find out the conductivity, specific conductance of this solution in terms of this value over here. And बहुत चीजें दी हैं. How do you start this? As usual, from first principles, right? What is kappa? Kappa is simply lambda naught into mole per liter because concentration. But I'm converting this to meter cube. Why? Because इसकी units है meter inverse. This is the only thing you have to be careful about in this question. After you do this, things are very doable. अगर आपने ionic equilibrium किया है तो. If you have skipped the KSP ideas of ionic equilibrium, life is going to get a little bit difficult. Life is going to be a little bit difficult. But the three folks who have given me answers here, looks like they have covered it for sure. Okay, what's the general idea? अगर मैं कोई common ion add करूं, तो उसकी solubility हो जाएगी कम. Yeah, this is what you know from ionic equilibrium. Now, what is this common ion I'm adding? I'm adding Ag plus. This comes from AgNO3, right? From here. तो वो यहाँ पे लिख रहा हूँ. That decreases solubility of this and of course इसका भी. Now, what is solubility anyway? Basically मैं कुछ S mole डाल रहा हूँ AgBr के in water and it dissolves. Now if I put some Ag plus ions are already there, it's like इतना dissolve नहीं कर पाता है. What कितना नहीं कर पाता है? Root of this would be root 12 into 10⁻⁷. That would be the value of S अगर कोई और ions नहीं होते. But because common ion उससे थोड़ा कम होना चाहिए. This is your litmus test, so to speak. इससे थोड़ा कम होना चाहिए. कितना है देखेंगे, then you get a quadratic equation which you have to solve for. Yeah, it's a straightforward quadratic equation.
The easy way to do it is to write in terms of factors. ये वाला तो value you'll cancel out because it's s plus 4 into 10 power minus 7. मतलब this will give you a value of minus 4. Doesn't make sense. The second one gives you a value of 10 power. I mean, it gives you a value of 3 into 10 power minus 7, which is a very legible value, right? Why is this legible? It's less than root 12. Root 12 क्या है? It's 3 point something, right? Specifically बोलना चाहो तो root 12 is going to be 2 into root 3, right? 2 into root 3, which is 2 into 1.7, which is 3.4. तो इट इज 3.4 होना चाहिए, बट 3.4 से घट के 3 हो गया है. And but what is Ag plus? This is another place for you to be careful about. Ag plus a concentration is going to be this plus 10 power minus 7, which is this value right here. That is 90% of your job done. What is left? Ag plus का हो गया, Br minus का लिख लो. तीसरी क्या चीज है? NO3 minus. या NO3 minus का तुमको मालूम है कि it is exactly 10 power minus 7. Let me write that down here. Then NO3 minus is also going to be 10 power minus 7. अब इन तीनों को बस ऐड करो using these three values. Yeah. Good evening, Shankar. What's happening? 1 liter 10 power minus 3 meter cube. Perfect. It's okay, Shankar. Nishant, good evening. Good evening. Fashionably late. Better late than never. No, that's what they say. So kappa निकालने के लिए क्या करोगे? The same thing I've taken over here. Okay. 7 into 10 power minus 3. Why 7? Because this is the value that's given over here. 7 into 10 power minus 3 times 10 power minus 7. This is the concentration, okay, and into 10 power 3, which is the conversion factor for liter to meter cube, okay, per liter to per meter cube, okay. That is what we are doing. ठीक है? Cool. Are you comfortable with this? What I have written over here? ये जहाँ पे लिखा है, yeah, this right here is the lambda naught value. This right here is the C value, and this is the conversion factor to convert from per liter to per meter cube. If you are okay with that, बाकी तो कुछ नहीं है. बस इसका यहां पे सब्स्टिट्यूट करो. सेम आइडिया यार. 6 into 10 power minus 7. This 3 and 3 gets cancelled out. तो मैंने बाकी में वो नहीं लिखा है. 6 is again lambda naught. 4 is again concentration. Yeah. Similarly, you get bromide ions का भी. 3 is your, in this case, अच्छा 3 is concentration. उल्टा हो यहाँ पे ना. 3 is concentration and this is lambda naught and this is 10 power minus 7. Add them all up. You get 55, which is a beautiful number. Wait, this side, sorry. This side, right? 55. And that's the answer right here. Yeah, JEE ke sawal are always a little bit annoying, but here's the beautiful thing. I've got two folks over here on top of my head, Shekhar and Yuvraj, who have wonderfully written this down and submitted this as an entire. That was beautiful, right? And how do they send this to me? Because I'm on I Teach Chem, and they're like, you know what? They've reached out. So that's very nice of them. It helps them, I'm sure. Knowledge ka yahi to sabse beautiful thing hai. The more you spread it, the better you get at it. You could trademark that maybe. So yeah, you can reach out to me on Telegram or Discord if you want to chat, guys. I'll help you in whatever way I can. Yuvraj and Rick, excellent work, excellent work. शुरू किया जाए सेशन? या पहला सवाल इतना ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. पहला सवाल, व्हाट कैन आई टेल यू? द रेजिस्टिविटी ऑफ अ 0.8 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज सम वैल्यू. रेजिस्टिविटी दी गई है. इट्स मोलर कंडक्टिविटी क्या है? कापा पूछा गया है. अब यार कर लो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक इक्वेशन कर लो. I'll give you 30 whole seconds to solve it. Thank you Republic of India जी. पुराने वाला सवाल बिल्कुल सही था आप लोग का. ये वाला ट्राई करो. I'll give you 30 whole seconds to do this. इक्वेशन चाहिए क्या? लिख लो यार इक्वेशन. कापा एंड ये है रेजिस्टिविटी एंड यू हैव R is equal to rho L by A and kappa is equal to 1 by rho. यही मैं याद रखता हूं. तो I am also suggesting to you that you can also remember this. Or if you have better ways of doing it, please go ahead. जो आपको ठीक लगे आप करिए. Try it out. Try it out. How else are you going to do this? रेजिस्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है. अरे टाइम अप हो गया इतनी जल्दी. 30 सेकंड इतने जल्दी चले जाते हैं. चलिए टेक सम मोर टाइम, ट्राई करिए. थैंक्स फॉर दैट रिपब्लिक एंड रेक. एक्सलेंट, यू नो द होल मीटर क्यूब वाली चीजें. बट इसको आप ट्राई कर सकते हो. मुश्किल लग रहा है क्या? एक इक्वेशन एक वेरिएबल डालो मिल जाएगा आंसर. उसमें क्या है? सीधा साधा है. नहीं, प्लीज ट्राई इट आउट. So that's the thing with this second part of electrochemistry. The reason I split it up into two parts is कि ये दूसरा वाला पार्ट ऑल्दो लगता है लोगों को मुश्किल, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसीलिए यही प्रूव करने के लिए बहुत ढेर सारे सवाल इस पे आते हैं. और इनफैक्ट जेईई एडवांस में ज्यादा आते हैं. या वुड यू बिलीव इट? जेईई एडवांस में ज्यादा सवाल आते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से दैट एज कंपेयर टू द होल क्या बोलते हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस एंड ऑल ऑफ दैट. बट आई डाइग्रेस. लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन राइट नाउ. वेयर आर यू गाइस एट? कोई हिंट चाहिए? यू वांट मी गाइस टू गिव यू मोर ऑफ अ हिंट or are we good? Are we trying this? क्या चल रहा है? Quickly checking Discord. 4, 2, okay. Ananya saying 2, Republic of India saying 4. शंकर बोल रहे हैं डाउट. बताइए. AFK कौन सा लिंक भाई? अरे आजा पीबी, क्या लिंक चाहिए? Bro, come bro, I'm live. Like this is what you call it. Aakash Byju's,
जेई आ जाओ, अभी हम शुरू कर रहे हैं। लिंक क्या चाहिए, ढूंढो और आ जाओ। 4 2 सर्ड आउट 25, ठीक है। I've got 4 answers here from, it's okay अनन्या, रिट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। शंकर डाउट पूछिए, तो डाउट बोल के आप भाग गए, बताइए। Okay, 25, Yuvraj is confident about 25. How do you guys know? How do you guys know? 25. Okay, looks like 25 is what we're converging at. Republic of India, do you want to do 4 or are you thinking you would want to change your answer as well? क्या लग रहा है? रुको, मैं डिस्कॉर्ड वाले लेजी बंदों को फिर से लिंक देता हूं ताकि वो लोग भी आ जाए यहाँ पे, अगर अभी ऑलरेडी नहीं है इन दिस सेशन। कहाँ गए हम? हैं जेई का ये वाला चैनल, पकड़ा जाए लिंक और डाला जाए फिर से डिस्कॉर्ड पे। PB, how do I tag people here? At PB. Okay, cool. Answers 25, पक्का सीधा वाला। शंकर, what's your doubt, bro? Like, डाउट के बाद भाग गए। R equal to rho L by A, kappa is 1 by rho, 1000 by 5, 1000 by 5 में फिर डालो फिर से ये, तो 10 power 6 by 5 into 0.8, मतलब 25 into 10 power 4, आंसर इज 25, ठीक है। अरे यार शंकर, शंकर come on bro, ping me on I teach chem, let's not go off topic, right? I don't mind answering chemistry doubts, but हम लोग electrochem की बात कर रहे हैं, तो आपके सब लोग दोस्त पढ़ के हैं, let's focus on that. If you want to talk about anything other than electrochem, ping me on this on Telegram or Discord, we'll talk about that there. Okay, yes, वाह रेक युवराज, प्रणाम, आप लोग हैं महान in all the most positive ways. पूरा सोल्यूशन लिख दिया वहां पे, सही है, सही है, सीधा साधा आसान सा आंसर। ये वाला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, और अगर आप चाहें तो हम लोग आई विल प्रूव टू यू कि ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से हो सकता है, बट ठीक है, we'll look at that. It's very interesting. For a lead storage battery, pick the correct statements. During charging of battery, PbSO4 और anode is converted into PbO2. यार ये सब कैसे याद किया जाए? During charging of battery, PbSO4 और cathode is converted to PbO2. ये तो कुछ अलग लिखा है। अच्छा, उसमें एनोड इसमें कैथोड, तो या तो ए और बी करेक्ट है, ठीक है। सी, lead storage battery consists of grid of lead packed with PbO2 as anode. यार, okay, last option. Lead storage battery has 38% solution of sulfuric acid as an electrolyte. बताइए इसका क्या करें? Choose the correct answer from the given options. मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए? What's the song? ये बोल रहा हूं, और करना तो पड़ेगा सवाल। ट्राई करो, प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई। ऑप्शन ए, Ananya is saying C, Yuvraj is saying A. Okay, 1 for Ananya for C and Yuvraj for A. Any other takers? Any other takers on this one? Okay, D. All right, we have one more. TM goes with D. Okay, Yuvraj is saying no. Yuvraj ने कर दिया retract. Okay. चलो ओके, टाइम अप हो गया, फिर भी कोई चक्कर नहीं, थोड़ी देर और के लिए देख लो। युवराज नॉट ए, निशांत कुमार 25। निशांत थोड़ा लैग चल रहा है लग रहा है। चलो लेट्स लुक एट इट वन बाय वन, एक एक करके देखते हैं। ए इज नॉट, हाँ ठीक है, ए इज नहीं, युवराज बोल रहा है कि ए पक्का गलत है, ठीक है, युवराज की बात मान लेते हैं। हाउ अबाउट दिस, एनसीईआरटी खोली जाए क्या? लगता है खोलना ही पड़ेगा एनसीईआरटी। लाइफ विल बिकम सो मच इजियर ना इफ यू जस्ट ओपन एनसीईआरटी। लेट्स डू दैट, लेट अस ओपन दी एनसीईआरटी। कहाँ गए एनसीईआरटी? ये है एनसीईआरटी। अरे नहीं, ये एनसीईआरटी नहीं, ये तो हरा वाला, ये एनसीईआरटी नहीं, ये है एनसीईआरटी। एंड देयर इज लाइक एन आर्टिफैक्ट ओवर हियर जहां मेरा हाथ थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ दिस लाइट, इफ आई मूव इट दैट्स बेटर, राइट? ओके, कूल, स्वीट। या दीस स्मॉल थिंग्स बग मी। हियर इज एनसीईआरटी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। लेट्स गो ऑल द वे टू द एंड। यहाँ पे फ्यूल सेल, यहाँ पे कोरोजन। ज्यादा एंड में आ गए क्या? ज्यादा एंड में आ गए, थोड़ा ऊपर चलते हैं। कहां? यहां। तुम कहां, मैं यहां। ओके, ए इज नॉट, रिपब्लिक ऑफ इंडिया स्टिल सेइंग डी। थोड़ा देख लें क्या,
उसके बाद तुम लोग फिर से देखना सवाल को। यस युवराज, आई लाइक इट, आई लाइक इट, आई लाइक इट, आई लाइक योर रीजनिंग, बट थोड़ा थियोरी पढ़ लो ना यार, एनसीईआरटी पढ़ लो तो बहुत आसान हो जाएगा। बिना एनसीईआरटी पढ़े व्हाट यू आर सेइंग इज गुड, इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, बट एनसीईआरटी है आपके हाथ में, पढ़ लेते हैं। 38% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। देखो ऑप्शन डी सही है, डी इज करेक्ट। मैंने कुछ गलती से आई जस्ट रेड, अरे 38% स्टूड आउट, वो वाला सही है, ठीक है। और क्या देखा है, एनोड में हो रहा है ये रिएक्शन, एनोड में होता है हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड में हमेशा होता है रिडक्शन, ये तो याद है आपको। और ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, पीबी इज बिकमिंग फ्रॉम 0 to 2+, एंड रिडक्शन में क्या हो रहा है, 4+ to 2+, इज दैट व्हाट्स हैपनिंग, लेट मी जस्ट चेक, हाँ यही हो रहा है ना, ओवरऑल रिएक्शन है ये। और अगर रिवर्स करना चाहो तो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमने दो चीजें देखी, एक तो ये वाला डेफिनेटली सही है और बाकी है। चलो लेट अस गो बैक टू दैट क्वेश्चन, और ये यहाँ पे आपका अच्छा सा दिया हुआ है पूरा सा डायग्राम, इस डायग्राम से इनफैक्ट सवाल पूछा गया, इफ यू लुक केयरफुली। आई विल गो बैक टू दैट क्वेश्चन। सर एक लेड स्टोरेज का डायग्राम होगी, वहीं से सारी इक्वेशन है। देखो युवराज को याद है कहां पे, एनसीईआरटी में, सही है युवराज, गुड स्टफ। लेट्स गो बैक टू दिस क्वेश्चन, डायग्राम यही ले आते हैं, बार बार एनसीईआरटी खोलने में जाए। लेट्स गेट द डायग्राम हियर, वेयर, लेट अस गेट द डायग्राम राइट हियर। ये लो तुम्हारा डायग्राम, ठीक है। क्या क्या लिखा है, कैथोड लिखा है, एनोड लिखा है, नेगेटिव प्लेट्स लिखा है, कुछ चीजें लिखी है। सो व्हाट इज द कैथोड, कैथोड इज वेयर रिडक्शन हैपेंस। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट्स टॉक अबाउट चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। क्या पहले बात करें, लेट अस टॉक अबाउट डिस्चार्जिंग, दैट इज इजियर टू अंडरस्टैंड। डिस्चार्जिंग, ओके, डिस्चार्ज मतलब कि भाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, द रिएक्शन इज कॉजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। मतलब कि गोइंग बैक टू दैट एनसीईआरटी वाला फिगर एक बार फिर से, वन मोमेंट, राइट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट this, right, these reactions, these two reactions specifically. Okay, back to the question. Back to the question. Okay, so discharging में मतलब कि अच्छा, this is furnishing electricity, so electrons will come in to the anode. Why? Because anode is something that furnishes the electron thing. Anode is where oxidation happens. Electrons आए ना मालूम नहीं, but it is definitely where oxidation happens, and this is definitely where reduction happens. ओके, तो ये कंफ्यूजिंग है, कोई बता नहीं रहा मुझे ऑप्शंस में, चैट में, व्हाट इज हैपनिंग। डी इज डेफिनेटली करेक्ट, राइट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड बिकॉज़ वो लिखा था एनसीईआरटी में। बिटवीन ए एंड बी कौन सा करेक्ट होगा बताइए, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, राइट। सी ये है 2+ से 4+, ओके ओके, कीप दिस इन माइंड। और हमने अभी क्या देखा था, एनोड में हो रहा था ऑक्सीडेशन विच इज पीबी 0 to 2+, और कैथोड में हो रहा था रिडक्शन विच इज Pb4+ to Pb2+। नाउ दिस वाज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ये था डिस्चार्जिंग वाला इक्वेशन, ठीक है। फिर से यहां पे लिख देते हैं, पूरा इक्वेशन यहीं पे लिख देते हैं ताकि आपको जो याद ना करना पड़े बार बार, ठीक है। देखो दिस इज द कैथोड, दिस इज द एनोड, ओके, यहां पे लिखा हुआ है बट आई विल हाईलाइट इट विद अ डिफरेंट कलर सो इट्स क्लियर। कैथोड एंड एनोड, छोटा छोटा लिखा है बट यू कैन ओपन एनसीईआरटी, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, कूल। उसका रिवर्स होगा एनोड, और अब उसका रिवर्स होगा डिस्चार्जिंग वाला आइडिया, राइट, चार्जिंग वाला आइडिया। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, सी आई हैव रिवर्स दिस रिएक्शन, मतलब कि नाउ एनोड एंड कैथोड आर रिवर्स, राइट। इफ आई रिवर्स द रिएक्शन, एनोड एंड कैथोड आर गोइंग टू बी रिवर्स, बिकॉज नाउ हियर यहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, सो नाउ दिस बिकम्स अ न्यू एनोड एंड दिस बिकम्स द न्यू कैथोड, ओके। व्हाई? बिकॉज दैट्स हाउ इट इज, ऑन चार्जिंग एनोड इज ऑक्सीडेशन, कैथोड इज रिडक्शन। So on charging of a battery, PbSO4 on anode is converted to PbO2, or is it PbO2 on cathode? It has to be on cathode. रुको देखने दो, it has to be on anode. My bad. It has to be on anode because you're going from 2+ to 4+. Is that correct? Yeah. Right? Hey? You're saying B and D, artificial intelligence. Okay. Rek is saying B and D, Yuvraj is saying B, not A. Okay, फिर से पढ़ते हैं. During charging of battery, PbSO4 on anode is converted to PbO2. PbSO4 on anode is converted to PbO2. Is that correct? This should be the new anode, no? Shouldn't this one be the new anode? Right? So is it A or is it B? कौन सा वाला सही है? Yeah? The main idea is that कि चक्कर ये है कि जो हमारा इधर है, what is happening here is
SO4 is getting Pb2+. The chakkar is कि एनोड और कैथोड बदल जा रहे हैं, राइट? बट एनोड एंड कैथोड अकॉर्डिंग टू दिस होल व्हाट यू कॉल इट बैटरी, जो पुराना टर्मिनल है वही नाम रख रहे हैं. वी आर नॉट चेंजिंग दैट. लुक्स लाइक, सी दिस इज द कैथोड हियर, दिस इज द एनोड हियर. दे आर नॉट चेंजिंग इट, ऑल्दो ऑन चार्जिंग यू गेट अ डिफरेंट एनोड. यू सी दैट? यस सर, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहे हैं, बाकी सब लोग थोड़ा शांत हो गए. या हेलो, सब लोग हैं या सो गए हैं? तो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, Rek. If you followed what Rek is saying, it's great. If not, please read NCERT. I have tried to give you a bit of an insight, but अगर भी random लग रहा है, please read the NCERT. I'm going to just write here with this nice yellow thing. कि yellow नहीं दिख रहा है इस पे ना. Let me use another dark color. Let us use say purple, deep purple, right? This is what happens on charging. Both of these reactions are reversed. Okay, so which means कि what are the options? You're listening. I know. I'm sure you're listening. Not questioning that. Don't worry. Maybe थोड़ा सा भारी है in a way because you are too much to mug, but it's okay. We'll figure it out together. So clearly, इसको जब reverse करोगे तो PbSO4 becomes PbO2 on the cathode. I know this is a little annoying, right? Because it's not really the cathode, right? It is the whatchamacallit. इसलिए आंसर नहीं कर रहे हैं. Okay, cool. ठीक है. That's good. So the only correct options are options B and D, which is the last one. Lead storage battery consists of a grade of lead packed with PbO2 anode. That's not correct. It's lead, spongy lead. That's the anode, right? ठीक है. Shall we move ahead? Okay, cool. AI. अगला सवाल. अरे बाप रे यार, लगता है फिर से एनसीईआरटी खोलना पड़ेगा. इसको कैसे करेंगे? एनसीईआरटी दिखा दो पहले, then you guys solve this. Hold on. Before you solve this question, let's go back to the NCERT. मैं जबरदस्ती आपको दिखा रहा हूं क्योंकि आप अपने आप तो पढ़ोगे नहीं एनसीईआरटी. This is a pseudo and yeah. Thank you, Yuvraj. Thank you for that. Yeah, absolutely. So here it is, right? The good friend cadmium. Another important secondary cell. Since आप लोग NCERT पढ़ते नहीं हो, यही करना पड़ता है. YouTube पे live NCERT पढ़ाना पड़ता है. कैसे दिन आ गए? I'm partially kidding. But this is what you need, right? This paragraph plus this. अब ये तो दिया हुआ है यार. Charging and discharging. The overall reaction during discharge. मतलब कि electricity being furnished, right? So electrons being furnished, not electrons, but basically electricity बनती है इससे. This is a spontaneous reaction, right? Charging मतलब non-spontaneous reaction. Okay? ये यहाँ पे पढ़ लिया. और कुछ देखना है? पढ़ लो. NCERT में जितना वो पढ़ना है पढ़ लो. Then we'll go back to that question. Nikhil, you're anonymous. I am anonymous. Okay. Arush, cool. I am anonymous. Yeah, that sounds scary if you read that voice that I just did. Here. Anticlimax, right? We thought this is going to be a heavy session, and then you've got NCERT. NCERT is all you've got to read. Okay, now try this question out. मैं आपको theory दिखा दिए ताकि nobody has an unfair advantage or disadvantage. Now read the question. You've got 4 options. Choose the correct answer from the options given below. कुछ है यहाँ पे. What is this one talking about? H2 plus O2 giving you H2O. Is this what? Which one of these is this? You got zinc plus HgO. वो देखना है. फिर cadmium वाला देखना है. फिर ये तो आप देख चुके हैं. Lead storage, right? Lead storage. ये क्या है? I'm tempted to give you the answer already. This also I'm tempted to give you the answer, but ठीक है. चलो try this one out. पढ़ी तो थी, but ये बैटरी वाला पार्ट याद नहीं है. मालूम है रेक, मालूम है याद नहीं है. इसीलिए मैं एनसीईआरटी खोल के फिर से पढ़ा रहा हूं. बिकॉज बैटरी वाला पार्ट मैंने बोला था तुम लोग को खुद पढ़ के आओ. मैं इस पे सवाल पूछूंगा, बोला था मैंने. खैर, try it out guys. It's okay. C, अनन्या, this time you're sure? ठीक है. अनन्या का C लॉक किया जाए. Okay. Ananya says C. Anybody else wants to give her some support? Ananya, B or C? AI is saying B or C. ठीक है, चलो. और कुछ? बी और सी. सी युवराज बोलते हुए सी फिर से. ओके, युवराज and Ananya are saying C. Nishant is also saying C. Rek is also saying C. All right, a lot of takers for the option C. AI is only one saying B or C. ठीक है, चलो देख लेते हैं. सबसे आसान चीज पहले करते हैं. सबसे आसान पहले क्या है कि देखो यार, नीचे वाला फ्यूल सेल है. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये फ्यूल सेल है, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे. सो D must mark with 3. If D marks with 3,
then it's either B or C. I see what AI did there. AI, I'm with you. It's either B or C for sure. बाकी क्या देखना है यार, ये वाला है प्राइमरी बैटरी, क्योंकि बाकी दोनों सेकेंडरी, तो ये वाला प्राइमरी होगा ना. अभी मैंने दिखाया आपको यार, अगर चार्ज और डिस्चार्ज दोनों हो रहा है तो दे आर सेकेंडरी बैटरीज. ओके, बोथ ऑफ दीज आर सेकेंडरी बैटरीज. अभी आपको ये थियरी दिखाया. सो विद दैट इंफॉर्मेशन आई थिंक वी आर गुड. B1, ओह नहीं, वी आर नॉट, वी स्टिल स्टक विद B and C. हाँ ठीक है, इन दोनों को कैंसिल कर दिया जाए. अब क्या बचा? अरे अभी देखा तो था, डिस्चार्जिंग और सेकेंडरी बैटरी, चार्जिंग और सेकेंडरी बैटरी. ये वाला इक्वेशन इज डिस्चार्जिंग, ये वाला है चार्जिंग. ये वाला चार्जिंग कैसे है? बिकॉज इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ डिस्चार्जिंग. आई नो देयर इज नो अदर वे टू सी इट. यू वांट टू सी इट वन मोर टाइम? एक बार एनसीईआरटी खोला जाए. वन मोर टाइम. ब्रिटनी स्पीयर्स सॉन्ग, नेवर माइंड. दिस इज द ओवरऑल डिस्चार्जिंग रिएक्शन. ओके, इसको रिवर्स कर दोगे, दैट विल बी चार्जिंग. Okay, wow, this is really not legible. Whoa. Okay, charging hoga opposite, reverse reaction, and that's what you're getting. Cool. All right. मेरे से मत खुलवाओ यार एनसीईआरटी, लोग खुद पढ़ लो, लाइफ बहुत आसान होगी. सिर्फ सी को मैच करके हो गया. That's the elimination method. AI, absolutely. सिर्फ सी को मैच करके हो गया, absolutely. अगला सवाल. The correct number of statements from the following. Now NCERT, I'm sorry, JEE Main has been doing this a lot. 4 तुमको थ्योरी सवाल देगा, बोलो फिगर आउट करो इसमें से कितने हैं सही. This is one of those questions. Conductivity always decreases with decrease in concentration for both strong and weak electrolyte. Number of ions per unit volume. Number of ions per unit volume that carry current in solution increase on dilution. Okay. Molar conductivity increase with decrease in concentration. Variation of molar conductivity. अरे यार बहुत सवाल है. 5 है. For weak electrolytes, change in molar conductivity dilution is due to decrease in degree of dissociation. Microsoft Edge, stocks, yeah, sure. CE, Prathamesh, सवाल लगता है आपने पढ़ा नहीं. Thank you for those, but you have to tell me the number of correct statements, and that's what makes things interesting because यहाँ पे +4 -1 है, मतलब तुक्का नहीं मारने का है. But it's okay. You can give me the which ones are correct according to you. If you say, if you are giving me a number, also tell me according to you उस number से कौन से वाले सही हैं. If you're saying the answer is 2, which 2 are correct? If it's 1, which one is correct? जो भी है. ट्राई करो. I'll give you 1 whole minute. एक पूरा मिनट दूंगा आपको करने के लिए. Try it out, please. Please try it out. Prathamesh, is your keyboard stuck, or I mean, are you on a physical keyboard or are you on a mobile phone? I'm guessing a physical keyboard because that's the only time a key gets stuck like that. You know, when you press it, it just goes there. Anyway, B and E are what Prathamesh are saying. C and E. Molar conductivity increases with decrease in concentration. Molar conductivity. क्या है भाई? C तो incorrect होगा ना? Prathamesh? A और E. Weak electrolytes, charge. Okay. Phone. A, C, D. Ananya, thank you. Rick, which 3? Ananya, thank you. A, C, D. Okay, देखते हैं. धीरे देखते हैं. Shall I go ahead and solve it? Do you want to take some more time to read? Take more time if you want. पढ़ने के लिए. Then I'll go ahead and help you out with this one. सही सवाल है ना? जेईई में बहुत सही सवाल बनाया है. BCE, okay. DE. सारे अल्फाबेट्स हो गए. ADE. Okay, BCE. Arslan, what's up? Okay, lot of options. 3, CDE. Okay, right. I think 2 people are saying the BCE, CD. कोई convergence है ही नहीं. 5. TM Gaming saying 5. अच्छा. पहला वाला देखते हैं. 1 step at a time. What is the definition of conductivity? It is simply the number of ions divided by volume, right? Proportional to number of ions per volume. So ये वाला तो सही है. अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो कापा तो कम होना ही है. कॉन्सेंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ आयन्स पर वॉल्यूम कम हुआ तो दैट हैज टू रिड्यूस. ए इज डेफिनेटली करेक्ट. तो बी तो पक्का गलत है. युवराज इज लाइक बी गलत है. ठीक है, देखते हैं बी क्यों गलत है. देखो, नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी करंट इन सॉल्यूशन इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन. नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर आयन सेम है तो डाइल्यूशन करने से नंबर ऑफ आयन्स क्यों बदलेंगे भाई?
कि ये तो गलत है. थैंक यू रैक, सॉरी युवराज, एब्सोल्युटली राइट, बी तो गलत है. सब बोल दो, कोई ना कोई तो हाई जाएगा, यही तो नहीं चलेगा. दैट इज व्हाट विल नॉट वर्क हियर, बिकॉज दिस इज समथिंग वेयर यू हैव टू गिव मी द नंबर ऑफ आंसर्स दैट आर करेक्ट एंड नॉट कि यू नो. तो नेगेटिव मार्किंग है भाई, तो यू कांट गेस. यू कैन इन दिस क्लास, यू कैन गेस, बट नॉट इन लाइफ इन जनरल. ठीक है, ये वाला गलत है. एनी डाउट ऑन व्हाई बी इज इनकरेक्ट, प्लीज टेल मी. थोड़ा ध्यान से पढ़ो, यू विल गेट व्हाई बी इज इनकरेक्ट. नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी करंट इन सॉल्यूशन थोड़ी ना बढ़ेगा. डाइल्यूशन मतलब पानी डाल रहा हूं मैं, पानी डालने से थोड़ी ना नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे घटेंगे. आयंस सेम रहे, कंसंट्रेशन बढ़ेगा घटे, नंबर ऑफ आयंस नॉट गोइंग टू चेंज, है ना. ऑप्शन सी देखते हैं. ऑप्शन सी देखने के लिए आई वांट और द रेस्ट ऑफ दैट, लेट्स जस्ट ब्रिंग दिस ग्राफ आउट. ओके, दिस इज फॉर strong electrolytes, this is for weak. Okay, now let's look at option C, D. Molar conductivity increases with decrease in concentration. Molar conductivity increases with decrease in concentration. What is molar conductivity? It's kappa by concentration. ये वाला है सही. This is correct. Please allow PDF. मतलब मर्दुल, I didn't understand what you mean by please allow PDF. PDF allowed. समझा नहीं. What were you looking for? ठीक है. Molar conductivity increase with dilution. I mean, sorry, increase with decrease in concentration. Definitely correct. Variation in molar conductivity is different for strong and weak electrolyte. हाँ, तो है ही ना, यही तो है. This graph shows that the variation is different. तो C is correct, D is correct. Last वाला option for weak electrolytes, the change in molar conductivity with dilution is due to decrease in degree of dissociation. ना. This is due to increase in degree of dissociation. कहां गया decrease? इसको काट के कर देते हैं increase. Okay. Dilute करो. If you reduce the concentration a lot, alpha tends to 1. इसीलिए तो this whole weird thing shows up here. Okay. So E is incorrect. The right ones are 3, A, C and D. KM Surya, do you follow? Why not option E? I have just explained KM Surya. भाई तू 5 बार बोलेगा, मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं बदलेगा. और कौन कहानी बोल रहा था? सर ओनली कीप्स कैप कापर डिक्रीज होगा ना. मोलार एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज होते हैं और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन. रेक, यस, एब्सोल्युटली राइट. यस रेक, kappa will decrease with concentration. Molar and equivalent conductivity will always increase with concentration कम होने में, because denominator में concentration है. You are right, right? Absolutely, absolutely. Yay, Ananya was right. So option A, kappa decrease होगा ना. Molar, yes, right? You are absolutely right. प्रथमेश, E नहीं समझ में आया? ठीक है, E फिर से करते हैं. E नहीं समझ में आया. मैंने कैंसिल आउट तो किया है. Is this theory? Have you not attended my last session? If you haven't, please check it out. Description में there's a playlist. Okay, playlist का जो last वाला session होगा, which will be attend that. Check it out if you want to. Always read NCERT, right? When you have weak electrolytes or even ionic equilibrium देख लो, right? As you decrease the concentration, मतलब concentration होता है कम, alpha की value बढ़ जाती है. Alpha keeps increasing or decreasing concentration. Okay, Oswald's law of dilution, etc., right? And to the change in molar conductivity with dilution is due to increase in degree of dissociation. ठीक है, dilute करने पे बढ़ जाएगा. That's all. It's a statement. I mean, what is it that you didn't understand? Please tell me ना. I get that you didn't understand, but which part did you not understand और क्या मुश्किल लग रहा है? Rec, option A सही है ना? अरे, kappa is conductivity, bro. Kappa is conductivity. It is not equivalent conductivity, it's equivalent conductance. रुको. Okay, hold on. Your concern, I understand your concern. तुम बोल रहे हो conductivity हमेशा नहीं होगी. Equivalent और molar conductivity are different. What happens if column is taken y-axis? Surya, I don't understand your question. Why option D? Vinayak, Dhwanit, congrats. Yeah. I think what Rec is saying, conductivity could be conductivity or molar conductivity, but I don't think that's the case, Rec. अगर molar conductivity होगा, then you'll call it molar conductivity. Conductivity does not mean conductivity and molar conductivity. Conductivity means just conductivity, which is kappa. है ना? Okay, let me look at anybody else who's saying something. Why option D? Vinayak, you may have to revise some theory,
but this graph is showing option D. Why option D is correct? ये graph है ना? This is for weak and strong electrolytes. For strong electrolytes, you've got that whole thing, right? There's an equation that goes lambda naught minus lambda. Sorry. Whoa. No, that got deleted. Minus root C, yeah. Lambda is dependent somewhere proportional to minus root C. That whole equation, yeah. Look it up. मैंने session किया उसमें. ठीक है? This graph is what explains option D. Bro, conductivity and specific conductance is kappa. Yuvraj, absolutely right. Sir, dilution, strong electrolyte conductance decreases. Right. On dilution, सबका कम होता है Arsalan. Everything decreases, but for a weak electrolyte, it decreases. It like the, what did you ask me? Strong electrolyte conductance. We're not talking about conductance, guys. Okay, hold on a minute. Let's. Yes, Shankar, I ignore you. भाई तेरा पहला मैसेज आया saying you ignore me. उससे पहले तेरा कोई मैसेज भेजा ही नहीं. क्या you ignore me? Okay, hold on. अभी एक एक करके बोलो क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है. You guys are chatting with yourself, not able to follow कि क्या सीन है, ठीक है? Your confusion is conductivity is boss kappa. Molar conductivity is lambda m, lambda equivalent. They are different from this. They are not equal. First thing. Second thing, these graphs are about molar conductivity versus concentration. If you have not seen this graph in life, please NCERT को खोलते हैं. Damn, the Shah Rukh Khan voice didn't go very well. यार अच्छा है मैं NCERT लेके आया. तुम लोग NCERT पढ़ते नहीं हो. रुको. Let us scroll and look for that part in NCERT where there's these amazing, beautiful graphs. Ye lo graph number 1. Ye lo graph number 2. Look at these beautiful graphs for option D. This is your graph. Okay. Molar conductivity versus root C for acetic acid. Ye hai weak acid. Ye hai strong acid. Okay. Look at this. Alpha almost becomes 1 when concentration बहुत कम हो जाता है. This is option E. Option D is from this graph that they vary differently. और किसको डाउट है? बताओ. PB, वाह. What's up, bro? सही है. All clear? Okay, great. आगे बढ़ा जाए. PB पढ़ता है NCERT से. PB is my favorite student. Anybody who studies from NCERT is my favorite student. Sayam, your question has your answer in it. जेई में तो कुछ नहीं डिलीट हुआ है. एआई ट्रिप मतलब एडवांस में कुछ नहीं डिलीट हुआ है. जेई मेन में डिलीट हुआ है. राइट. सो यू हैव योर आंसर देयर. खैर आगे बढ़ा जाए. या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. Arsalan, bro, there is no concept of degree of dissociation in strong electrolytes. Bro, Arsalan, it's like नहीं यार Arsalan, ऐसा मत करो मेरे साथ. Degree of dissociation of alpha only varies if you think about it only when you talk about weak electrolytes. Okay, भाई रुको, तुम लोग को ये देखना ही पड़ेगा. Like it looks like you guys have a lot of doubts in the basics, so please go to this, read up either the NCERT or go through this. ठीक है? इसमें है ionic equilibrium के सवाल. Cannot go through ionic equilibrium right now. इसीलिए electrochemistry sometimes students को मुश्किल लगता है because they are not that strong in ionic equilibrium. So पढ़ के आओ. अगला सवाल. Thank you Prathamesh for that enthusiastic whatever that is. Yeah. Wow. That's a breaker. Plotting 1 by lambda m versus C lambda m for aqueous solution of monobasic acid resulted in a straight line y-axis intercept of P and slope S. What is the ratio of P by S? एक और ग्राफ का सवाल. सायम, yes, युवराज, ये वाला करो. This is from JEE Advanced. डरो मत. डराने के नहीं बोला. तुमको बताया कि बहुत आसान सवाल है JEE Advanced का. ट्राई करो. Let's go. Can we try this, guys? Where are we at? Just fixing some alignment stuff that I see over here. Found it, deleted it, found it. Alignment. So much better now. Guys, पहले theory कर लो, फिर question करना. KP. Oh my God, KP from Discord. Oh my God. Is it KP? Same KP? Prathamesh, you are going to be hidden in this channel because I don't take crap from anybody. ठीक है? तुमको टाइम पास करना है ना? Go do it somewhere else. This पढ़ना है तो यहाँ पे आओ. All right. You are hidden. Can't tolerate that crap, bro. Let's do this.
Shall we solve this question, please? Do you see hustle? I don't know what hustle you're talking about. Ah, okay. I am him. He is me. Yeah. Can you solve this question, guys? I'll give you a bit of a hint. Here you go. Right? This is the graph you're trying to plot. You're trying to plot a graph of 1 by lambda m versus c by lambda m. Lambda m is molar conductivity. And आपको निकालना है intercept versus slope, मतलब कि p by s का ratio. Now this may look a little scary, right? Do you want me to help you solve this? विनायक भाई क्या तू एसिडिक अल्कोहल लेमन लेके बैठा हुआ है? मैं कर रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काय टाइम पास कर रहा है? If you want to talk about random things chemistry, ping me on I teach chem here. Okay? Let's not go off topic. Okay? Cool. So please try this out. Now here's the scene, right? How do you solve this question? Do you want me to walk you through this? Are you going to try it out? Or shall I, I can give you a minute to try it out. After I'll walk you through it. The only hint that you need is, boss, alpha is equal to lambda m divided by lambda naught m. ठीक है? This is what you need to know. उसके बाद बस यार डालो, हो जाएगा तुरंत. Nothing else to do. बहुत straightforward है. By the way, this k here is kappa. It is not. Why is it k? It should be kappa. Hold on. I think while I was moving this from here to there. No, sorry, this is not kappa. What am I saying? K is that of an acid. Yeah. Dissociation constant of an acid. My bad. That was a dumb moment. Dissociation constant of HA, the weak, or HX. यहाँ पे HX है ना. और lambda m is molar. Lambda m is molar conductivity. बहुत धीरे लिख रहा है for some reason. All right. And what else do you have here? Anything else you don't understand? Lambda naught m is standard molar conductivity. Okay. Hint दिया तो please sir बताइए. Isn't it alpha? Right? Nothing happening. Okay. Cool. Case decision constant. Okay. All right. HK's flight simulations. Why do I have a feeling that somebody that I just banned just came back here with a different account? I've been told that people do that on Discord a lot. Khair, alpha is lambda m by lambda naught m. What is K? Is simply C alpha square by 1 minus alpha. अब कर लो. इसके बाद क्या करना है? अभी this is your hint. Big enough hint. शंकर कुछ नहीं कट ऑफ है यार. इलेक्ट्रोकेम पूरा है. Nothing is cut off. युवराज, does this help? ठीक है यार. ये भी एनसीईआरटी में. रुको. Before writing this down, and I'm not dissing you guys by telling you एनसीईआरटी में है. मैं आपको एक्चुअली बोल रहा हूं भाई एनसीईआरटी में है. That's all you've got to do is read एनसीईआरटी. रुको. इसी का नेक्स्ट वाला पार्ट. और ये जे एडवांस में है. Students think they will do 10 other books, but they will skip NCERT. देखो, application of Kohlrausch law के just ऊपर right here. Alpha is lambda m by lambda naught m. Ka is this. ये हम लोग सेशन में भी कर चुके हैं, right? The only thing that I did was that, I wrote this down and I did a derivation. मैंने बोला कि boss, HA gives you H plus and A minus. So you do whatever, the whole thing. C into 1 minus alpha, C alpha, Ka is equal to C alpha square by 1 minus alpha. Don't ignore this. Please don't say that 1 minus alpha equal to 1. नहीं, ये सब बकवास मत करो, ठीक है? Leave it as it is. Leave it as it is and then substitute alpha as lambda m by lambda naught m. So you do C into, यहाँ लिखा है, फिर से को derivate करो. This is what you do this and you get this expression. यहाँ से हो जाएगा. विनायक, तुम आंसर तो दो. स्पीड तो हम कोई भी ले जा सकते हैं. यू गाइस आर नॉट गिविंग मी आंसर्स. आंसर तो दो तुम. स्पीड कहां से इंक्रीज की जाए? सी आई एम गोइंग टू गो विद, इफ यू गेट, तो समझ में आ रहा है, दैट्स माय मेन फोकस. स्पीड इज नॉट माय फोकस. यू वांट स्पीड, यू गो समवेयर एल्स. पास जाके पढ़ लो एनसीईआरटी, पहले पढ़ के आओ, फिर बात करेंगे भाई. स्पीड बढ़ाओ. इट सीम्स दिस इज वेरी स्टैंडर्ड. यू थिंक इट्स डी. कहां है? हाउ डू यू थिंक इट्स डी? एक्सप्लेन टू मी बॉस प्लीज. करके तो देखो दोस्तों. एनीबडी एल्स ट्राइंग दिस? ओके, सो डी है विनायक. ओके, कूल, ठीक है. लेट्स सी. You don't have to apologize, guys. You have to just solve the question. Anybody else thinks it's D? Use the formula, cross multiply. You still think it's D? I know the process, boss. मैंने देखो भी बताया, but answer तो बता. And repeat the interception slope. Okay, cool. Let's see what we get over here. ठीक है? Exactly what you guys are saying. Cross multiply करो. What am I doing? I'm keeping this here. I'm taking this to the other side.
Once I do that, I get this. ठीक है? Now from here, what do I need? What do I not need? Remember, this lambda naught m and lambda m are different. Don't make it a square over here. I've seen students do random thing like that. Please don't do that. Now my focus is to get c lambda m on one side and 1 by lambda m on the other side. So what do I do? What I will do is मैं इसको क्या कर सकता हूँ? How do I separate lambda m and c lambda m? So I will just take lambda m on this side. Okay. I will divide the whole thing by lambda m. Okay. And I will keep this guy on this side because यहाँ पे है, ठीक है? So I get here this whole thing divided by lambda m, this by lambda m. तो यहाँ पे lambda square goes off and becomes c lambda m, which is what I want, right? On this is x is equivalent to x, and then after that I get ka into lambda m. Are we one step closer? Yeah, we're almost there, right? From here, all I need to 1 by lambda m यहाँ पे है. All of this is a constant, right? And this is also constant. So just manipulate it a little bit more and you get 1 by lambda m equal to this whole thing over here. Hold on. Is it going behind me? It is definitely going behind me. Hold on. Let me fix the alignment a second. You'll be able to see it right about now. Yeah. Is that better? Dikh raha hai abhi? I think you'll be able to see it. Now, once you've got that sorted, oh, sab chala gaya. That's brilliant. Hold on. This is in the form of y equal to mx plus c. What is y? This is y. What is m into x? This is x is your c lambda m. M is everything else. Okay. And this is c. So what remains is for you to just find out what is p, what is s. P or the intercept is going to be this. This is your intercept. Okay. यहाँ पे तो c लिखा है और फिर से लिखने की जरूरत नहीं है. So I have 1 by lambda m divide lambda not m divided by this whole fat thing here, and you get the answer to be option A. किसी ने A बोला? अभी भी D बोल रहे हो भाई साहब, अभी भी D बोल रहे हो. शंकर A है, D नहीं है. विनायक, शंकर. Oh wow, this frame looks funny, right? You've got so much stuff all around me. Yeah, little messy, but pen और राम और श्याम D पक्का, not A. Okay, क्या बोलूं अब मैं यार? नहीं सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है. ध्वनित प्रणाम. Apologies are not needed. I'm just नहीं बिल्कुल यार. See, if I am being a little loud or being hyper, it is to guide you in the right direction. ठीक है? Please don't take offense. I will never shout at you in a way to berate you. ये मेरा गोल नहीं है लाइफ में किसी के लिए भी. My goal is always to encourage everybody. ठीक है? Just putting it out there. Maybe आप लोग पहले मेरे सेशन में नहीं है इसलिए आपको लग रहा है कि अरे बाप रे आशीष ने चिल्ला दिया. That's not what's happening here. Anything I tell you will be to guide you in the right direction. इसलिए बोला भाई चेक कर ले. इसलिए बोला एनसीईआरटी दिखा रहा था. Not to say कि भाई इतना आसान है एनसीईआरटी में. Not, that was not the goal. Cool. विनायक, how do I clear that doubt यार? I mean, how do I do that? अरे sorry फिर भी बोल रहे हो. It's okay. It's okay, Ananya. That's the right attitude, right? I would appreciate that a lot. If you are following at the end of the day, that's great. Everybody else, if you're following now, अच्छी बात है. पहले नहीं हुआ तो कोई चक्कर नहीं है. अभी हो गया ना, chill है ना. Let's move on. Shall we go on? ठीक है? युवराज is ये option A. Right? It is such a straightforward question, but you get annoyed because यार ये है वो है. It just takes a little bit of effort out of you to do this. Vinayak यार, I don't have an answer. Hey Kev, I know Kev from Discord. That's wonderful. Let's go on to the next question. बहुत टाइम पास हो गया. अगला सवाल करते हैं. अरे बाप रे 10 ही मिनट बाकी है. We've spent 50 minutes already. ठीक है. Sorry विनायक, थोड़ा slow हो गया session. I did not mean to shout at you saying अरे slow, fast, whatever. See, the goal is कि अगर slow लग रहा है तो skip कर दो ना, forward कर लो, वीडियो में बाद में देख लो, कोई टेंशन नहीं है. But लोगों को समझना चाहिए, right? At least the ones that are coming live, I want you to understand everything. जो लोग live नहीं देख रहे, ठीक है, थोड़ा fast forward कर लेंगे, आगे पीछे कर लेंगे, chill है. अगला सवाल देखा जाए. फ्री में सेशन है, इस सेशन को इंटरनेट मिलने नहीं वाला है इलेक्ट्रोकेम पे, ढूंढ लो. The resistance of a conductivity cell with a cell constant blah containing blah blah is this. थोड़ा ज्यादा आसान सवाल नहीं हो गया? The molar conductivity of this is what? यार वैसे सवाल के बाद ऐसा सवाल, ठीक है, ये सब हटा देता हूं ताकि आसानी हो. Your time starts or no? Damn it, no time starts. Resistance मतलब कि
सेल कांस्टेंट इज जी स्टार। ओके, ये क्या है? दिस इज कॉन्सेंट्रेशन। करो करो, ट्राई करो, ऐसे ही मैं लिख रहा हूं। रेजिस्टेंस है यहां पे दिया ओम। ओके, मोलर कंडक्टिविटी इज व्हाट? लैम्डा एम। ओके, एंड नोटिस मैंने लैम्डा एम लिखा है, नॉट लैम्डा नॉट एम। लैम्डा नॉट विल बी फॉर वन मोलर व्हाटएवर, लैम्डा एम इज फॉर दिस वैल्यू हियर। ओके, क्या निकालना है? ओ, लैम्डा एम ही निकालना है। निकालो भाई, टर्म्स देख ले, टर्म्स देख के। हाँ, आई नो युवराज, मेरा भी, आई एग्री विथ यू। Huge explanation, artificial explanation is back, I was saying. So I was just trying to prove to you guys कि NCERT पढ़ने से you will be able to advance level questions of this second part of electrochemistry easily. That was the moral of that story or that question. ठीक है? It was not to intimidate you. NCERT पढ़ लो यार, यही बोल रहा हूँ मैं, हर सेशन बोल रहा हूँ NCERT कर लो। Vinayak, I don't know the answer to that, bro. How is that a doubt? Like, how would I know the answer to that, bro? Like, बताओ, seriously. I'm reading everything you're saying, but I have no answer to that. सवाल कर लें यार, ये तो डायरेक्ट सवाल है, कर लो। थैंक यू अरमान। अरमान ने लाज बचा ली एज ऑलवेज। अरमान इज बैक विद द बैंग। सी दैट 767, लुक एट दैट, लुक एट दैट, लुक एट दैट। 3 बार आंसर देते हुए कबूल है, कबूल है, कबूल है। युवराज भाई 770 कहां से आया यार तेरा? 760, स्वीट, यस एग्जैक्टली, HK, एब्सोल्युटली, आई नो देयर इज अ टाइपो, इट्स ओके युवराज। तो लैम्डा m is k times kappa times 1000 by c, और you can also say kappa is g into g star, वो भी लिख सकते हो, g by r, और g by r, k is, you mean g star by r, right? HK flight simulations, you mean g star by r, not g by r. G star is cell constant. Okay, yeah, I don't know if this is there in NCERT or not, but g star is the standard way of writing it. So g star is simply 1.14 by 1500. और कुछ करना है? हाँ यार, और कुछ भी करना है, लैम्डा m निकालना है, तो मल्टीप्लाई करो यहां पे, या I'm just substituting this here directly. 10 power minus 3 क्यों आया? Because that is a concentration over here. This is C, this is resistance, and this here is G star. डाल दो, हो गया 760 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लेट अगला सवाल, ये वाला फिर से जेई एडवांस का सवाल है, डरा नहीं रहा हूं। 752 कैसे आया भाई? Okay bro, I'm gonna like read this. Wow. Yeah. You guys, like, let's do a 15-second silence, not 2 minute silence, but 15-second silence for what artificial intelligence wrote. Wow, we have a funny in the comments. The molar conductivity of a solution of a weak acid HX is 10 times smaller than the molar conductivity of a solution of a weak acid HY. If lambda naught दोनों का same है, the difference in pKa values is what? ये है 2015 का। विनायक 52 कैसे आया समझ नहीं आया, जस्ट अ कैंसिलेशन थिंग ना, 760 आ जाएगा। इट्स ओके युवराज, डोंट वरी, मैं आपकी भावना को समझ गया। इट्स ओके, यू गॉट द राइट आंसर, गुड जॉब एवरीबॉडी। एक और जेई एडवांस का सवाल। यू बी लाइक यार चीटिंग कर रहे हो, तुमने बोला था PYQ करोगे, जेई एडवांस का दे रहे हो, तुम बोल रहे थे जेई मेन का करोगे। कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है, जेई मेन जेई एडवांस, जेई है ना, नीट वाले भी दोस्त भी कर सकते हैं, उसको कोई टेंशन नहीं है। एग्जाम इज एग्जाम, कर लो, सिंपल सा सवाल है, सिंपल है, क्यों? सेम चीज, थोड़ा सा मैथ्स अलजेब्रा इधर उधर करना है, एक्स वाई थोड़ा खिलवाड़ करना है। या वी डू फॉर श्योर युवराज, आई बिलीव वी डू। अरमान सेइंग 3, डू यू गाइस एग्री विद अरमान? 3 बार बोल रहा है अरमान 3। व्हाट्स दैट अबाउट? टाइम बचा है, थोड़े और सवाल मेरे बचे हैं। कितने सवाल बचे हैं मेरे? आई हैव 1, 2 और सवाल बाकी हैं, कर लोगे क्या? एक सिंपल है, एक थोड़ा सा नॉट सो सिंपल है, कर लेते हैं। 10 मिनट में भी विल गो ओवर टाइम, कर लेते हैं। KF माइनस है, कोई टेंशन नहीं है, एक बार चेक कर लो। शंकर CBSE बोर्ड, हाँ CBSE का तो है। 3 बार 3 बार CBSE बोर्ड। इट लुक्स लाइक समथिंग इज स्टक। शंकर भाई क्या करूं मैं CBSE बोर्ड का? See, at least put a crying smiley. Look at that effort. Look at KF. He's like, sir, मेरा -3 क्यों आ रहा है? With a crying thing. First he said just मेरा. Make that effort. Copy paste मत करो. KF, thank you. I will tell you. Just because KF put that crying smiley, I'm going to explain. Right? What is alpha? Alpha is lambda m by lambda naught m. Okay? Minor mistake. Okay. एक homework question दे दूं युवराज? दे दूंगा for sure. KF, thank you. HX or HY, 2 things, simple stuff, nothing complicated so far.
what is the whole thing going to be, right? K, which means your dissociation constant is simply C alpha square. Why? Because 1 minus alpha is equal to 1 in this case. Okay, so I have substituted this. मैंने बस लिखा है कि देखो C alpha square by 1 minus alpha is equal to C alpha square. Okay, so that's my short way of writing कि Ka of Hx is equal to this, Ka of Hy is equal to this. ठीक है? So far so good. No doubts here. Use log Ka and do. Thank you so much, sir. Yes, Ka, you're awesome. Shankar, either you're not listening to me or you're just spamming me, bro. अगर तू स्पैम करेगा मैं तेरे को टाइम आउट देने वाला हूं. नहीं है भाई कुछ डिलीटेड. मैं मतलब सीबीएसई बोर्ड जाके बोर्ड में देखो ना, मैं जेई का काम कर रहा हूं. क्यों भाई, क्या कर रहे हैं तू शंकर? ओके, दैट्स इट ब्रो, यू आर डन. सॉरी, दिस इज द एंड ऑफ माय रोड फॉर माय पेशेंस. मैं तेरे को 4 बार बोल चुका हूं. यूजुअली आई डोंट गिव पीपल दिस मच ऑफ रोप. खैर, युवराज, व्हाट वाज योर क्वेश्चन ब्रो? सर वो अच्छे वाला है, वो होमवर्क दे दो. ठीक है, दे दूंगा. इसको तो पहले कर लो. Yes, 3 is the right answer. But how do we get to 3? Same thing, yaar. Just divide both of these. Hold on. This is bugging out a little bit. My animation is not smooth and that's not fun. So let me just close this chap. Keep my annotations and फिर से एक बार करते हैं. Control Alt F5 and oh shoot. ये क्या हुआ? तो काला हो गया. Bro. Okay. Wait. Nothing broke, right? Oh my god. 1 second. Don't hang, please don't hang. Okay, let me close random things. Okay, we're back. We never went anywhere. We're back. pKa 1 करके ये 12th का चैप्टर है क्या? Yes, तेजस 12th का चैप्टर है. Yes, Arman, absolutely. तेजस, language like that will not be tolerated. First and last time. तेरे को बोल रहा हूं मैं. ठीक है? All right. So when you divide both of these Ka values, you get simply C इस तरफ, alpha square इस तरफ. Why did I take them out separately? Because you have C values, right? Molar conductivity दिया हुआ है और C दिया हुआ है. ठीक है. Molar conductivity is 10 times smaller and concentration is also given to be 10 times. So बस वहां पे उन दोनों करो. Yeah. This idea, guy, this is same for both. Lambda naught m is same for both. So now I can write alpha in terms of just lambda m. I have deleted the denominator वाला lambda naught m, right? ये मैंने ignore कर दिया है because it gets cancelled out. Once I do that, I just get 10 power 3. I get 1 by 10 power 3 to be specific, right? ये वाला हो गया 0.1. This is, so what you get is 1 by 1000. So Ka Hx by Ka Hy is 1 by 1000. So pKa minus pKa of Hy will be minus of minus 3, which is 3. Are we good? बोर्ड पे लिख कैसे रहे हो? हवाई जादू से. जादू तेरी नजर. शाहरुख खान सॉन्ग्स, व्हाट्स रॉन्ग विद मी ब्रो? एक और सवाल, ये भी जेईई एडवांस का है 2021 का. बड़े आसान है. दिस इज वेरी डायरेक्ट. The limiting molar conductivity of a weak monobasic acid is 4 into 10 power 2 something. Okay. And for an aqueous solution of the acid, degree of dissociation is alpha and the molar conductivity is this. अच्छा. So ये limiting है, which means कि this is lambda not m. Okay. And just lambda m is some value. Okay. और 20 बार dilute करने के बाद you get lambda dash m, so to speak, to be this. What is the value of alpha? Try करें. Kev, you're most welcome. Good job. Tejas, time pass करेगा तो you're gonna get muted in the next time you do time pass, you're gonna get muted. Where have you used 10 times smaller वाला part? Ananya, sorry that if that went away too quickly. Let me go back here. Where have I used 10 times? ये देखो यहां पे है ना अनन्या, दो चीजें हैं. ओके, सी हियर, कॉन्सेंट्रेशन पहले मैंने लिख लिया. अनन्या प्लीज लिसन अप. 0.01 इज हियर, 0.1 इज हियर. ठीक है. 10 टाइम्स स्मॉलर वाला मैंने यहां पे यूज किया है.
See, the molar conductive solution of this is 10 times smaller. मतलब कि what this saying is कि lambda of hx by lambda of hy is equal to 1 by 10. वही मैंने यहाँ पे लिखा है. Why square? Because alpha square and alpha is this value itself. Ananya, is that okay? Yeah? Is that okay? Hey Ayush, what's up? Arman giving answers 0.88. Thank you. गुस्सा नहीं हो रहा, टाइम पास नहीं टॉलरेट करता, बस डिस्कॉर्ड में जरा टाइम पास करना है करो, यहां पे नहीं. दिस इज वर्क ब्रो, मेरे लिए तो है. सो Ananya, is that okay? Wherever you use the 10 times smaller part, this is where we use 10 times smaller part. Yeah, you do lambda hx by lambda hy, you get 1 by 10. That's what I've substituted over here, and उसको मैंने स्क्वायर किया क्योंकि ये अल्फा स्क्वायर है. ठीक है, let's go ahead. Tejas have done mole concept already, if you haven't checked that out. Okay, excellent. Let's move on. ये वाला सवाल करो. Somebody said 0.88. Okay, this was Arman. Not taking any prisoners. तुरंत करते हुए देते हुए आंसर. What is array? It's okay, it's okay, it's okay. All right. युवराज also giving the same answer. लग रहा है यही है आंसर. कैसे किया आप लोगों ने? बहुत जल्दी किया. I love it. I love it. ठीक है. तो lambda not m वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है. What is alpha? It is lambda m by lambda not m. Same चीज मैं बार बार लिखता हूं. मेरी आदत है बार बार दोहराने की, because first principle से you will solve everything. This is the first principle way of doing it. So Ka I can write as this expression. Are you comfortable with what I have written over here? Okay. Why have I written y by 4 whole square? Because look, I have y into 10 power minus 2 divided by 4 by 10 into 10 power minus 2. Y into 10 power 2 divided by 4 into 10 power 2. Okay. This is basically alpha. ठीक है? And I'm just substituting here. And remember, 1 minus alpha is not equal to 1. दोस्तों, please don't say 1 minus alpha is equal to 1. मत करो यार ऐसी हरकतें. Unless it actually says in the question कि look, oh, alpha बहुत छोटा है. नहीं करना है. Don't do this. Okay, that's why please write this expression down. Once you do that, write the other expression down. What is the other expression? When you do C by 20, then in that case, your whole business is कि अच्छा the new alpha or alpha dash नहीं, हमको alpha निकालना है. Alpha dash is what? Alpha dash is 3y into 10 power 2 divided by 4 into 10 power 2, which is simply 3y by 4. Okay, that's it. You've got two equations and two variables, c and y. C I don't need. I can get rid of c, right? उसको कैंसिल कर देते हैं. I need to find y. If I find out y, I will get alpha. y कैसे निकालोगे? ये यहाँ पे y भी चला जा रहा है, तो डिनोमिनेटर सिर्फ y रहेगा, right? So when you cancel stuff out, all that remains is this nice thing over here. Yeah, कि 20 into 1 minus 3 by 4 is 9 into minus this thing. Let me erase this here. Give me some space to write this. बहुत छोटे जगह है ना लिखने की, क्या करें? Y is simply 44 or 51. What is 44 or 51? Is it 8.88? Arman? Okay, thanks Shankar. You are a regular man, but yeah, tolerance की मेरी थोड़ी सी low limit हो जाती है कभी-कभी. 0.88, is that correct? 0.22 into 4. Arman, thank you. Is that correct? 44 by 51. इसको कुछ simplify कर सकते हैं क्या? 3 से डिवाइड होता है, कुछ नहीं होता है. 45 by 51 कितना होगा? So if you're not sure about this, right? 45 by 51 goes by 3, right? 1, 5, 1, 7, 15 by 17. अरे यार, और प्राइम नंबर्स. हाँ यार, 0.80 होगा. 17 into 8 कितना होता है? 8 7 6, 5, 8 1 8, 136. अरे यार, ठीक है. और 14 बच गया. 140. हाँ, 0.88 ही आ रहा है मेरा भी. Cool, awesome. 0.88 is the right answer. Good job. Tejas. Tejas, are you from Discord, bro? Is that same Teju? Anyway, if you want to talk about atomic structure, you can ping me on I Teach Chem. Okay, you know me on Discord as well as on Telegram. Perfect model. Perfect कोई नहीं होता है. देश कोई perfect नहीं होता है. उसको perfect बनाया जाता है. तुमने शाहरुख खान मूवी देखी नहीं है क्या लाइफ में? Nothing is perfect, dude. Perfect तो सिर्फ भगवान है. ये दुनिया perfect नहीं है. थर्मोडायनेमिक्स कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं. आखिरी सवाल किया जाए. Alpha is 0.22, but we need to find y. Hold on, Yuvraj. I'm going to go back there. I'm going to go back to that question. Value of alpha पूछा था. अच्छा, hold on.
या डूड, वैल्यू ऑफ अल्फा पूछा गया था, नॉट वाई। मैं समझा नहीं आपकी बात। अल्फा इज 0.22। ओ ओ ओ ओ या सॉरी या my bad, thank you for correcting me. 0.88 is not alpha, alpha is 0.22, y मैंने निकाला, alpha हमको निकालना था alpha, my bad, it should be 0.22 not 0.88. yeah, thank you युवराज, absolutely KF युवराज, thank you, excellent work. आज का आखिरी सवाल कर लेते हैं। I don't think it's complicated. Let's try it out. Consider a strong electrolytes, 3 है strong electrolytes. Limiting molar conductivity values किसकी दी हुई है? 1, 2, हाँ इन दोनों की दी हुई है। The value of M और N plus P, मतलब ये charges आपको निकालने हैं, M, N और P. Let me erase that so you can read this clearly. What is given? Lambda naught is limiting molar conductivity of ions given in this table. The plot of molar conductivity of Zm versus root C is given over here. Zx, sorry. तो ये है Zx, Zm xn, उसका हम लोग प्लॉट कर रहे हैं लैम्डा वर्सेस रूट सी। You want to try this out? It's okay. अरमान होता है। I'll tell you what the minor mistake was. ये आपने सॉल्व किया होगा ऑलरेडी, और एक्चुअल सॉल्व y दिया था, मैंने बोला कि अल्फा निकालो, whatever, one of those two, right? या मैंने बोला अल्फा की वैल्यू निकालो। The original JEE question was कि y की वैल्यू निकालो, या तब उसमें y था। Yes युवराज, absolutely right. I changed it to alpha ताकि थोड़ा आपको एफर्ट लगाना पड़े। वाह तेजस, that's good bro. Yeah, answer is yeah, Arman CR7. Oh, he's a fan of Ronaldo, looks like. Yeah. How do you solve a question like this, guys? Can you tell us how you solved it, Arman, this quickly? ये आंसर 7 बता रहा है। This is PYQ. या अच्छा आपने देखा हुआ है। KF next time कौन सा कराओगे? KF, I think the plan for next time I'll show you later. Yeah, I showed at the starting of the session. I'll show it to you again. Is to do a revision session of for JEE main. Yeah, not necessarily all PYQs, but generally practice questions. अरमान को आंसर याद है, बहुत अच्छी बात है। Shall I go ahead and tell you how to solve it in the interest of time? Yeah. First step, form the expressions using this table. What expressions? Expressions of lambda naught. Okay. It's additive, right? So I have to do basically, अगर मुझे निकालना है u y का, then I have to do 25 times, you know, u m y p, right? So I have to do m times the lambda naught of m of u, sorry, plus p times lambda naught of y. That will be equal to uy का क्या था? uy का is going to be equal to 250. So I'll get one expression in m and p. I'll get one expression in m and p. वैसे आप लोग दूसरे कर सकते हैं, और आप इसका स्लोप निकाल सकते हो. You can get the a value from here. Okay. If I get the a value, then I can backtrack and I can get lambda naught of this guy as well. Last step, you will get lambda naught m. ठीक है? Substitute and you will get mn and p. हाँ, चौकस पढ़ाई किस कॉलेज से हूं? I went to Surathkal, dropped out, went to RV, graduated from there, went to ISC, do a PhD, dropped out of there. Short story. Shall we solve this question? Am I a little blurry? Hold on. This blurry business. It should be fixed now. Okay, thank you, Arman. Yeah, that's much better. M is equal to 2. Okay. And N equal to 3. Okay. Rest of you guys, are you trying this or is this like ज़्यादा हो रहा है ये वाला सवाल? What do you think? What I'm saying is, एक बार वापस बताऊं? Kev, sure. Let me help you out. Do you understand what's on the screen right now? Lambda um times and yp will be m ions of u right? This is just like saying if I have MgCl2, I will do Mg plus 2Cl minus. So the lambda naught will be 1 Mg plus 2Cl minus, because we are doing lambda m, not lambda equivalence. If we are doing lambda equivalence, you would not have to worry about this number m and p, okay? But that's a story for a different day. Since we're talking about lambda m, you will have to worry about mn and all of that.
Okay. Shankar has got the answer. That's great. That's great. Okay. So this is the first expression. This is the second expression. Are you guys okay with these two expressions? I don't see a few people who were active earlier. Let me scroll up. Anirudh, all okay? Kev, Arman is good. Tejas, पढ़ रहा है या भाग गया? Yuvraj, Shankar, Chaukas, Ananya, anybody else? Vinayak? Are these two expressions okay? Rest of the question very doable. Cole Roshlaw, thank you, Uttam. Yes. Okay, all right, all right. Not messy, huh? Okay, cool. So I just substitute these numbers. ये 250 तो यहाँ पे दिया हुआ है, 440 भी दिया हुआ है. Put it all over here, and I get two expressions. I have M, N, and P. Now I have two equations, three variables. Now that's a problem, right? So let me write that down again. You've got two equations, three variables. So I need to form another equation. Where will that third equation come from? From this nice graph over here. This nice graph that's bugging out. एक और बार इसको कीप किया जाए, एक और बार इसको रन किया जाए. लगता है कि जितने ज्यादा मैं आप एनिमेशन इसमें डाल रहा हूं उतना ही ये भाई साहब बैठ जा रहे हैं. अरे खुल जा सिम यार. Don't die on me. You're a very nice laptop. Please don't die on me. Oh, it's dying, bro. It's just been 1 hour. लगता है कि इसकी लाइफ हो रही है खत्म. खैर. Okay. So from here, I get lambda m is lambda m naught minus a root c. This is for strong electrolytes. Okay. And उसी का यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है. So I can get that, okay, minus a की values, this is the slope. Right? What is this? Is a slope. And I can get that slope from just these two values. What did I do? I took 336, 339, this minus this. Why did I put minus a? You can see, right? The slope is negative. That's it. ठीक है? Cool. Yeah? That's great. That's great. Good to know, Arman. That's good. Mbappe में O नहीं है. So you get A to be 100. Once you get A to be 100, I substitute in any of these things. मैं किसी भी या तो ये point या तो ये point, or I can substitute anywhere and I get lambda naught m to be 340, and that gives you my third equation. Now these two equations there, this is my equation 1, equation 2, and here is my beautiful third equation. Third equation क्या है? 340 is going to be equal to 50m plus 80n. You can just check this, and now I have three equations, three variables, and we can hold on, go to the other side. Whoa, पानी गिरना नहीं. Okay, there's a bottle, glass of water there. Three equations, three variables, solve them, make them simple here, let them come here. You get n equal to 3, you get m equal to 2, and you get p equal to 2. आजकल काफी lag हुआ. I think it's the laptop that's dying out. Yeah, it's weird, right? I know, I'll tell you what is, I have a lot of things open right now, but it shouldn't die. It's like a pretty heavy laptop. Khair, such is life. Everything dies, right? क्या करें? Cancel. JEE NEET plan. You are here. Okay, hold on. Let me close down some things. That will help. That's a good plan. Close. Cancel. Save. Close. Anyway, अभी तो सेशन खत्म ही हो गया. छोड़ो. सब कुछ क्लोज करने की जरूरत नहीं है. I have another question for you, but ठीक है. Let's do a homework question. Let's keep this as a homework question. Here you go. This one's homework. Okay. Let's call it a day. होमवर्क. आसान सवाल दे दिया होमवर्क में, मुश्किल सवाल सारे कर ही लिए. ओके, चलो. वाह, केएफ इज लाइक फुटबॉल कुछ नहीं होता, फॉर्मूला 1 इज द बॉम्ब. ओके, बढ़िया. चला जाए. सैटरडे इवनिंग. आई होप दिस वाज एंजॉयबल. आई नो इट वाज अ लिटिल हेवी. आई डिड द मोस्ट नंबर ऑफ JEE advanced questions I have done in a session with you guys ever. I think we did 4 or 5 JEE advanced questions, which may seem like a lot, but I'm trying to prove to you कि NCERT से ही आप सारे JEE advanced के सवाल कर सकते हो. That was what I was trying to prove to you. Batteries, ये सब चीज सब NCERT से एक बार पढ़ के किया है. ठीक है? हाँ यार, यही होता है. Theory questions में it tells you, right, कि this is something that we must do. We must read NCERT and make notes from NCERT. आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मैं बहुत आभारी हूं आपका. बट उससे भी ज्यादा जरूरी है आप एनसीईआरटी पढ़ें. एंड दिस सेशन वाज प्रूफ ऑफ दैट, राइट? यूजुअली यू गाइस आर वेरी गुड, वेरी क्विक एट गिविंग मी आंसर्स, बट
बट आज थोड़ा सा मुश्किल लगा, मुझे ऐसा लगा, आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लगा. एंड द सोल्यूशन इज रीड एनसीईआरटी. समबडी वाज आस्किंग मी अर्लियर कि अगला कौन सा पीवाईक्यू करोगे. सो दीज आर द थिंग्स दैट आर अप नेक्स्ट. ओके, आई एम गोइंग टू डू दिस. मे बी आई विल डू नॉट पीवाईक्यूज बिकॉज आई वाज टोल्ड कि पीवाईक्यूज आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो सारे, तो आप लोग को आंसर मालूम होता है. तो इवन इफ आई गिव यू पीवाईक्यूज, मे बी आई विल चेंज देम अ लिटिल बिट. तो दिस इज ट्यूसडे एंड दिस इज थर्सडे एंड देन अगेन अगले सैटरडे एंड देन द साइकिल रिपीट्स. या 3 करके. ठीक है, this is the plan for the coming days. And if you guys are looking for the other content that I have generally made, here you go. ये है, आप आराम से इसको देख सकते हैं. All the sessions on JEE, NEET, etc., etc. There's a very special thing over here that you may not have seen before, which is this, right? This is J. अरे ये क्या आ गया? नहीं भाई, मुझे लिंक दो. ये this is not some, these are things you're not going to find anywhere else on the internet, right? These are JEE advanced level questions made back in 2019, but they're pretty good questions, so check them out anyway. चलो, I'm done for the day. Thank you so much for sticking around. And अगर भारी हो गया सेशन तो मैं आपका आभारी हूं कि आप यहां तक इतनी दूर तक रुके. Yes, शायर हैं हम. Please share this with your friends and subscribe to the channel if you haven't already done so. It will help us bring this awesome content to you regularly. ठीक है, मिलते हैं. Bye. Good evening. Coordination. हम तो काफी कोऑर्डिनेटेड लग रहे हैं, नहीं? सेकंड ग्राफ अरमान और क्रिकेट. होमवर्क आंसर इज 2. अरमान, ब्यूटीफुल. सर चेस से बढ़िया कुछ नहीं है. युवराज, बहुत टाइम पास हो रहा है. लव इट. अनन्या, थैंक यू. रेक, जस्ट चेकिंग ऑल द कमेंट्स आई मिस्ड. केएफ, फुटबॉल कुछ नहीं होता, फॉर्मूला 1. अच्छा, नाउ आई हैव कॉट अप विद ऑल द थिंग्स. मरदुल, मैं समझा नहीं. प्लीज अलाउ यू पीडीएफ, मतलब आई विल सेंड द पीडीएफ ऑन द टेलीग्राम चैनल. इफ यू डोंट हैव द टेलीग्राम चैनल का लिंक, रुको भाई, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल ही देते हैं. अब ये भाई साहब मृदुल कुछ बोल रहे हैं, मैं उनकी भाषा, आई एम नॉट एबल टू फॉलो व्हाट यू आर सेइंग एंटायरली मृदुल, बट इफ यू आर सेइंग दैट यू वांट द लिंक टू आवर टेलीग्राम चैनल, आई विल गिव दैट टू यू राइट अवे. ओके, दिस इज वेयर यू गेट पीडीएफ. दिस इज वेयर यू विल बी अलाउड टू एक्सेस द पीडीएफ. बाय, गुड नाइट. थैंक्स अरमान फॉर द आंसर. बाकी लोग भी ट्राई करो. ठीक है, टाटा. थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग अराउंड. ट्यूसडे को मिलते हैं. गुड नाइट.